हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है 20 सरप्राइजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। ओके, इस तरह की वीडियो हम काफी टाइम के बाद तो मतलब हमें काफी सारे फैक्ट्स पता है और इंडिया मुझे के बारे पता है इन 20 में से बहुत कम ऐसे होंगे जो हमें सरप्राइज करेंगे, क्योंकि वी ऑलरेडी नो अ लॉट अबाउट इंडिया। लेट्स सी कौन से सरप्राइजिंग फैक्ट्स हैं। Hey guys, my name is Dave Wapple and welcome to FTD Facts, the channel where we teach you about everything and everything, whether it be space, the cosmos, celebrities, or your body, or in this case, India. India, it is huge. As a matter of fact, it's so big, it makes up 17.5% of the entire world's population. Hey, fact number one. And first of all, we gotta thank a couple of YouTubers for recommending this video. That's Manish Singh and Ritzy Lala. But you know what, there are some interesting and shocking facts about India that you guys need to know about. So let's find out what they are. And before we get into it, I want to know, if you guys could travel anywhere in the world, where would you go? So you got number one, the population makes up 17.5% of the world's population. But how big is that exactly? Well, the population of India currently sits at 1.2 billion people. And guess what, guys? It's steadily rising. As a matter of fact, by 2022, they predict that it will definitely destroy China's population. And by 2050, there will be 1.6 billion people living in India. The Kumbh Mela is a mass pilgrimage of faith, where people gather around a sacred river to bathe. In 2013, the Kumbh Mela estimated over 120 million people. And on February 10th of that year, 30 million people came to the festival. As a matter of fact, it was so big that you could see it from space. At one point, India was an island. 100 million years ago, back in the dinosaur days, it broke off from the supercontinent Gondwana land, and it moved north, eventually crashing into Asia. And because of this collision, that is why we have the Himalayan mountains, which are the youngest but also the biggest mountains. In India, there are more road deaths than in any other country, with an approximation of 115,000 people dying a year from motor vehicle accidents. Now here's a shocking fact. I always thought that Hollywood was like the biggest film industry in the entire world, but actually India is. They produce over 1,100 films a year. And a lot of you guys might think, oh, they're all Bollywood films, but that's not actually true. Bollywood only produces about 200 of them. In India, they have 6 seasons. Yeah, I know, we only have like 4. You got spring, you got summer, you got monsoon, you've got autumn. And then of course you get winter, but then there's another one called Provernal. Alright, so for this next one, you know when you guys travel to a country and sometimes you like to bring some currency back, something maybe to put in your scrapbook? Well, believe it or not, you can't do that in India, because it is actually illegal to leave the country with any form of Indian currency. Mumbai is one of the most polluted cities on the planet. As a matter of fact, it's so polluted that if you spend one day there, they say it equals 100 cigarettes. Ugh, how do people live there for more than like 3 days? In certain states in India, if you're a police officer and you grow a mustache, you will get a pay increase. I'm just waiting for them to get like monocles and maybe some top hats, and then they'll be really classy. India is also a country that has not invaded a country in 10,000 years. Although some scholars say it was 100,000 years, but this is due to the fact that India was a very rich nation, and actually kings were too busy fighting amongst themselves. In India, there are more mobile phones than there are toilets in the entire country. Wow. Okay, this is not a shocking fact, but this is really one for me. You guys know these things? Yeah, these awesome looking formal jackets. I know, they're so cool, right? Well, they're called Shawanis, and I want one. That's just the fact right now. If you go to India, be careful of the children in the school. 61% of them have a disease that causes germs on their hands. So don't be shaking anybody without sanitizing. Now, we all love spices. Some people like it hot, some people like it mild, but a lot of you guys in first world nations may think, hey, well, we get our spices from like places like Mexico. But that is actually not true, because 70% of the spices that are sold worldwide come all the way from India. Now, for us here in North America, most of us are sitting complaining about not enough female leads in Hollywood or Donald Trump, or we're complaining about first world problems. Meanwhile, in India, they have a child slavery problem. Slavery is still a thing in India, and believe it or not, they think that there's over 14 million people in slavery, and most of them are all children. And just so you know, most of these children are working in things like quarries. Not good. In India, there's an airline company called Go Air. And speaking of females from the last one, this company only hires females. Why? Because, well, they say that females are lighter, and because of that, they save up to $500,000
$300,000 US a year simply on fuel. Bills in India are great for the blind. This is because they have Braille on them. But they're not the only country to do it. Countries like Russia, China, Mexico, and Israel also do that as well. India's also claimed that it has the most diverse amount of languages in the country. In 1961, a census went around totaling 1,652 languages in the country. Big ones are, well, you guessed it, Hindi, Bengali, there's also Telugu, Marathi, and Urdu. For me, I've always loved the animals from India. They're way better than the ones in North America. I mean, elephants are just super cool. But did you know that there are over 90,000 species of animals in India? 350 of them are animals, there are 1,200 types of birds, and as for plant species, well, there's over 50,000 of them. And last but not least, guys, India has a great space exploration program, and it's getting better year by year. In 2009, India was the first country to discover water on the moon. And it makes you wonder what else they will create and what else they will discover. Guys, I'm not gonna lie, this has been an awesome treat for me to talk about. To be real, there are so many things about India that I learned that I just couldn't put in this video, otherwise it would be super long. So if you guys would like to see a part 2 or have a suggestion for another type of video, let us know down there in the comments below. But thanks for watching, guys. My name's Dave Wapple. This has been FTD Facts. Be sure to subscribe to the channel, tune in for other videos, and if you guys want more Dave Wapple, head on over to my personal channel. We'll also put it down there in the description box below. Cool. I'll see you guys in the next video. Bye. ओके, FTD फैक्ट्स की वीडियो थी, काफी अच्छा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एनी न्यू फैक्ट? 2-3 चीजें थी इसमें। एक बर्ड एंड प्लांट स्पीशीज वाली बात, स्पीशीज 19,000 प्लस स्पीशीज, इट्स अ बिग थिंग, ह्यूज। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा शॉकिंग मेरे लिए था, जो मुझे अभी तक नहीं पता था और पता होना चाहिए था, वो जियोग्राफिकल जो बात हुई है कि एक्चुअली ये पूरा जो एरिया है ये पार्ट ऑफ एशिया। अच्छा, ब्रोक डाउन और वो क्लूजन वाली बात, और ये जो हिमालयस पूरी बनी है, ये पता होना चाहिए था। तो ये पता होना चाहिए था, ये नहीं तुम्हें पता? मुझे वेग सा आइडिया, मैंने इसको डीप स्टडी नहीं किया था, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मतलब नहीं पता, थोड़ा बहुत था, मैंने बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया है। मुझे पता होना चाहिए था, मुझे नहीं पता, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए था सरप्राइजिंग। अपना रीजन है जहाँ पर हम वही, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक बुरी बात है, मुझे पता होना चाहिए था, बट उसमें नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट चीजें वही थी जो ऑलरेडी हम ज्यादातर वीडियोस में देखते रहते हैं, जिनका हमें पता है, ज्यादातर वही थी। बाकी एक चाइल्ड स्लेवरी वाली बात थी, वो उससे रिलेटेड इश्यूज जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उसमें हैं, इस तरह के इश्यूज हैं। तो ये दीज आर दोज इश्यूज, वन ऑफ दोज इश्यूज दैट रिक्वायर अटेंशन, और आई होप कि इस मामले में काम हो भी रहा होगा, क्योंकि अगर ये इतनी बड़ी बात है कि इतनी इस तरह से अगर 19 इंपॉर्टेंट चीज़ों को कलेक्ट किया जाए तो उनमें से एक अगर आ रही है, तो ऑब्वियसली इस पर कोई ना कोई काम ज़रूर हो रहा होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऑब्वियसली इसकी इस तरह की ये और इससे रिलेटेड और जो इश्यूज हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाते हैं। बाकी इसरो वाला वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आएगी कब आएगी, सो वो फाइनली आया। इसरो ऑब्वियसली जितनी भी उसके बारे में बात करें, दे आर ग्रेट अचीवर्स, और उनके जितने भी मिशंस हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा हम अभी वीडियोस देख चुके हैं। वो ऑब्वियसली दे आर डूइंग रियली ग्रेट, और सीरियसली दे डिजर्व ह्यूज रिस्पेक्ट, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि ये सारे मिशन उन्होंने किए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी जगहों पे हो रहे हैं, बट जो रिसोर्सेज वो यूज़ करते हैं, जो वो अपने पास एक्सपर्टीज जो बिल्कुल लोकल, उनके पास एक्सपर्ट लोकल मीन्स के सिर्फ एक कंट्री की, जैसे नासा को देखा जाए तो उन्होंने पूरी दुनिया से जो बंदा काम का मिलता है वो उठा लेते हैं। तो उस हिसाब से अपने कंट्री के सारे साइंटिस्ट को जमा करके विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज वो अपने मिशंस लेकर चलते हैं और बड़े सक्सेसफुल रहते हैं मिशन। और खास बात स्पेशलिटी यही है कि उनके मिशंस बहुत इकोनॉमिकल होते हैं। सबसे फेमस उनका मिशन हुआ था लास्ट ईयर, जिसकी कॉस्ट एक हॉलीवुड मूवी से भी कम थी। एग्जैक्टली, वो जो मार्स बनी थी उसे। तो ऑब्वियसली उस हिसाब से इसरो डिजर्व्स अ ह्यूज रिस्पेक्ट। इसरो को काफी एक्नॉलेजमेंट मिलती है वर्ल्ड वाइड पर, अगर हम देखें इस वीडियो में भी काफी एक्नॉलेज किया गया इस चीज को। ये बहुत अच्छी बात है कि नासा का कोई कंपेटिटर है। हाँ, और एक बात, ये पॉपुलेशन वाली बात भाई, मतलब व्हाट इज इतनी ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला इन द फ्यूचर हो सकता है। तो पॉपुलेशन एक्नॉलेजमेंट है, लोग इसको कंसीडर करते हैं, काम हो रहा है ना। बट इंडिया की पॉपुलेशन शुरू से इतनी ज्यादा, लार्ज पॉपुलेशन इज नॉट एन इशू। उनकी ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो वो डिक्लाइनिंग डाउन, इट इज आई थिंक 1% पर आ चुके हैं, 1.1% है।
पाकिस्तान का 1.7% पाकिस्तान का ज्यादा ओवरऑल थोड़ा है। अफगानिस्तान का 2.3% है। तो ये रीजन की बात हो रही है, पर यहाँ पर लोगों को पसंद है क्या? लार्ज पॉपुलेशन। अच्छा बिग पॉपुलेशन। हाँ, वो इन्हें ज्यादा बच्चे अच्छे लगते हैं। असल में यहाँ पे जो लोग यार हैं भरा भरा लगता उनको है। बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है, तो इसलिए वो कहते हैं बच्चे ज्यादा सारे होने चाहिए। बच्चों से प्यार है। बच्चों से प्यार है ना, बच्चों से प्यार है। ओके बच्चों से ही प्यार है, ठीक है, आई कैन प्रूव दैट। लेकिन फिर कभी, ठीक है, वो खैर ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और इन सारे इश्यूज पे, इन सारी चीज़ों पे अगर आप कोई कमेंट ऐड करना चाहें पॉपुलेशन की बात को छोड़ के, क्योंकि आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि वो पता नहीं फिर मुझे दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज, फिर मैं इधर 18+ ना लगा मुझे पता है। इसलिए यार इसके बारे में कोई भी आप कमेंट करना चाहें, किसी की बात के बारे में कुछ भी कहना चाहें तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ये 2 चैनल है हमारे, चेक करते रहें। दूसरे चैनल पे भी वीडियो आएगी, मेरे करम अर्जुन आएंगे, कभी तो आएगी। कभी तो आएंगी। See you in the next video. Until then, खुदा हाफिज।